بشپ اینڈرو فرانسس، آپ کو BLB-PP میڈیا کی طرف سے ہیپی برتھ ڈے ان ہیون۔ BLB-PP میڈیا کی یہ کاوش ہے کہ ہم اپنے ان پیاروں کو اور خاص طور پر کلیسیائی رہنماؤں کو جو خداوند میں سو گئے ہیں، انہیں ان کی ڈیتھ اینیورسریز اور سالگرہ پر یاد کیا جائے۔ تو ہماری اس سیریز کا یہ ایک حصہ ہے کہ آج ہم بشپ اینڈرو کو بھی یاد کر رہے ہیں کیونکہ آج ان کی سالگرہ ہے۔ تو ہمارا ایک عام رویہ ہے کہ ہم اپنے پیاروں کو جو خداوند میں سو جاتے ہیں انہیں بہت جلد بھول جاتے ہیں، اور خاص طور پر جن لوگوں سے ہمارا خونی رشتہ نہیں ہوتا ہم انہیں بہت جلد بھول جاتے ہیں۔ تو ہماری یہ کاوش ہے کہ ہم تمام کلیسیا کو، اپنے مسیحی بہن بھائیوں کو اس طرف راغب کریں، موٹیویٹ کریں کہ وہ ایسے لوگوں کی ڈیتھ اینیورسریز اور ان کی برتھ ڈیز پر ان کے لیے اور ان کے خاندانوں کے لیے دعا کریں۔ تو آئیے ہم سب مل کر اس نیک کاوش میں شامل ہوں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو ہمارے اس آئیڈیا کا پتہ چل سکے۔ ونس اگین lots of prayers for Bishop Andrew's family and friends. Thank you and God bless you. Hello, good morning. This is Father Cecil Paul Oimai from Oblate Philosophy at Johannabad, Lahore, Pakistan. I am the director here in the Oblate Philosophy, where the boys come from Multan to join the Major Seminary Francis Xavier to do their philosophy. I am also the director for the Oblate Media Center in Pakistan. So I have been asked to speak over the big icon or the personality of late Bishop Andrew Francis. I think the world knows him, the Pakistani church know him, even the other faith know him, who Bishop Andrew was. He was a charismatic leader, a big personality, whom not only the Catholics, the other denominations, Muslims, Hindus, Sikhs, they were also keeping an eye on him and the word he used to speak. They used to listen to him and obey him. He was my ideal as well as my model right from my childhood, because I was the one who used to look at him as he was practicing his priesthood in St. Anthony's Church, Empress Road, Lahore. He was known as a charismatic priest. Introduced Christ the King procession, coronation of Our Lady, adoration, and a big gathering used to be gathered in Railway Stadium, Lahore. Of course, when he became bishop, most of the things just got stopped, and the priest, those who went there, they couldn't follow or they couldn't continue the traditions he put up. I also remember that he went to Philippines in 1982 or 84. He completed his dogmatic theology. He did his doctorate and came to Pakistan. And then he started his Sara Gharana and many other ministries. He was famous for Christian-Muslim dialogue and was famous to have dialogues with the ulama and mashayikh and different Maulana Hazrats in Pakistan, and even with the other faiths like Hindus and Sikhs. He was known for when there were conflicts between Christians and Muslims and other faiths. He was the man who was known as a person to bring some sort of peace and stability within the country. I heard that he was very famous in Vatican and as well as in Islamabad for his relationship with Vatican and the government of Pakistan. He did lots of good things in Pakistan, but unfortunately when he met with an accident, I was in Quetta in 2012, and since then he was very hopeful that he will get better and will be able to walk again. But then unfortunately he remained on a bed and confined to his room till he died. So he was very enthusiastic person. I think many of the Pakistani priests, those who are of my age, they have seen him working
meeting with the people, meeting with the government officials, military, and many other officials. And he became a kind of icon for many young priests, even for myself. I would say that he contributed a lot in terms of writing, in terms of literature, Christian literature, in terms of promoting different devotions within the Catholic Church in Pakistan, and to have a kind of debate with the other denominations. He was very famous among the Protestant churches. I heard that there was a time when there was a conflict in one of the churches in Kasur. It was a Presbyterian church, and they had fight, and it was Bishop Andrew, when he was a priest, a young priest, that people used to invite him for Sunday services and so on. So he did a lot, and since I'm directly related to him as his nephew, and many people know that I have been ordained through him, because we were the first 5 oblates in Pakistan who ordained through his hands in Multan. And I would say he did a lot for the Pakistani church, and to introduce many good things into the Pakistani church. I would say that Bishop Andrew will never die. The systems and the rituals and the devotions he began, like coronation of Our Lady and Christ the King procession, though they are not on a big scale, but still going on a small scale in every parish in Punjab and in other dioceses of Pakistan. I would also say that he was an enthusiastic and very intelligent and brave priest. Used to stand. I remember I was in Kasur, and Bamniawala, one of the villages, was set on fire by Muslims, and he was the one with other bishops stood and helped us, and had communication with the ulmas and others, and brought peace and stability. So he was a man who knew how to speak and how to act and how to bring people on a one platform of peace, solidarity, and love and compassion for each other. So thank you very much. Hello, good evening everyone. मेरा नाम कैनी है, मैं फिलाडेल्फिया यूएसए में रहता हूँ. आज मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि मैं डॉक्टर बिशप एंड्रू फ्रांसिस के हवाले से कुछ पुरानी बातें, कुछ पुरानी यादें आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ. बिशप एंड्रू का और मेरा रिश्ता मामू और भांजे का था, और वो मेरी अम्मी के बहुत छोटे और लाडले भाई थे. मेरी अम्मी को हम लोगों ने बचपन से सुना है कि मेरी अम्मी को हमेशा कहती बाजी कहते होते थे, और हम बहन भाई उनको मामू साहब कहते होते थे. मेरा वो नाम नहीं थे लेते, मुझे हमेशा भाई कह के बुलाते होते थे. भाई किधर जा रहे हो? तो इस तरह उनका स्टाइल होता था बात करने का. अगर मैं अपने नानी नाने के हवाले से बात करूं तो उनके भी वो लाडले बेटे थे, और अपने भाइयों के भी वो लाडले भाई थे. मेरे 3 मामू ऑस्ट्रेलिया में होते थे, और वो हर साल अपनी वेकेशन में ऑस्ट्रेलिया ज़रूर उनके पास जाते थे, उनको मिलने जाते थे. और वहाँ पे भी मेरे मामुओं के जो बच्चे थे वो खुशी से पागल हो जाते होते थे कि वो बिशप एंड्रू आ रहे हैं. खूब उन्होंने तैयारियां करनी. इधर जब वो अमेरिका मुझे और मेरे भाई को मिलने आए, हम दोनों भाई भी बहुत खुश थे. 2 दिन वो यहाँ पे रहे हमारे पास. अगर मैं अपनी ज़ात की बात करूँ तो मेरे लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है कि बिशप एंड्रू जब बिशप बने तो बिशप बनने के बाद पहला निकाह उन्होंने मेरा किया. बहुत धुंध थी, और मुल्तान से वो बाय रोड आ गए मेरे निकाह पढ़ने के लिए लाहौर. और इसके साथ साथ बतौर इंसान अगर मैं बात करूं तो बहुत लविंग थे. वो बहुत लविंग थे. हर एक को वो प्यार करते थे, हर एक की वो बात सुनते थे. हमारे ख़ानदान में जब भी कोई प्रॉब्लम होनी, हम लोगों ने उनको दुआ के लिए कहना, उनको फ़ोन करना, और हमेशा वो
1 या 2 मिनट में कह देते थे कि हाँ जी ज़रूर, मैं अभी दुआ करता हूँ, आप रेडी हो जाएं, मैं अभी आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ। इसके साथ साथ अगर मैं उनकी रूहानी ज़िंदगी के हवाले से बात करूँ तो हमारे ख़ानदान का वो फ़ख्र थे, और रूहानियत के हवाले से आप सब भी जानते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया, बहुत सारे मौजज़ात उनकी ज़िंदगी में हुए, और सब लोग उनको बहुत प्यार करते थे और वो लोगों को भी बहुत प्यार करते थे। मेरी अम्मी के हवाले से मैं बात करूं तो आज भी उनकी वफ़ात को 3 साल हो गए हैं, और मेरी अम्मी के तकिए के नीचे से आज भी उनकी फ़ोटो होती है कि जो वो सुबह निकालती हैं, देखती हैं, फिर चूम के रख देती हैं। तो मैं जब पाकिस्तान गया, मैंने जब ये देखा तो मैं ये फ़ील कर सकता हूँ कि मेरी अम्मी उनको कितना प्यार करती थी। तो इसी तरह मुझे पता है कि आज भी उनकी कलीसिया के लोग जहाँ जहाँ भी वो रहे हैं उनको आज भी याद करते होंगे, और आज भी वो उनके साथ ही हैं और हमारे भी साथ हैं। थैंक यू। Dear Bishop Andrew Francis, happy birthday in heaven. I remember in 1992, before coming to America, I had a feast of St. Anthony in June. So you were a parish priest at St. Anthony's in Lahore. So I invited you to come and preach, and you asked me if you could bring Sarah Grana with you in the bus. So I agreed, and you really preached a meaningful, life-changing message. Thank you for being the glue that brings the people together to listen to the Word of God and to practice it in life. May your soul rest in peace. BLBBP के डायरेक्टर हैरी नईम का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने बिशप एंड्रू फ्रांसिस की सालगिरह के मौके पर ये एहतमाम किया है कि ये वीडियो प्रेजेंटेशन तैयार की जाए। बिशप एंड्रू फ्रांसिस की 74वें जन्मदिन के मौके पे उनको हम 74वीं 74th बर्थडे आसमानों में बहुत बहुत मुबारक कहते हैं। 16 फरवरी 1981 को जब पापा आज़म मुक़द्दस जॉन पॉल II पाकिस्तान आए तो नेशनल स्टेडियम में तशरीफ़ फरमा थे। उनकी आमद से पहले उस वक्त के फादर एंड्रू फ्रांसिस ने लाहौर से तेज़गाम और खैबर मेल 2 गाड़ियों का इंतज़ाम किया था, जिसमें मोमिन को ये सहूलत थी कि वो 50% टिकट में डिस्काउंट के साथ सफ़र कर सकते थे। और स्टेडियम के अंदर उन्होंने अपने वल्वला अंगेज़ क़ियादत का ये सबूत दिया कि वो स्टेज पर जाकर उन्होंने, जब पापा आज़म भी स्टेडियम में दाखिल नहीं हुए थे, तो लोगों के लिए पापा आज़म की खिदमत में या उनके लिए नारे बुलंद किए। जब मैं 1988 से 1993 तक सेंट मेरी सेमिनरी का रेक्टर था, उस वक्त फादर एंड्रू फ्रांसिस सेंट एंथनी पैरिश के पैरिश प्रीस्ट थे, और वो सेंट मेरी सेमिनरी में मेरी दरख्वास्त पर सोशियोलॉजी पढ़ाने के लिए आया करते थे। सेंट एंथनी पैरिश से यीशु बादशाह का जुलूस एक तारीख़ी वाक़या होता था, जब सेंट एंथनी से बड़ी तादाद में लोग सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल में इस जुलूस के लिए जाया करते थे। सेंट एंथनी पैरिश में उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए जिसमें लोगों की रूहानियत को बहुत अहमियत दी गई, और यूकरिस्टी सजदे और यूकरिस्टी एडोरेशन को 24 घंटे के लिए 24 आवर्स ही इंट्रोड्यूस्ड। तो ये बड़ा अच्छा इक़दाम था, जिससे मोमिन को ये मौका मिलता था कि वो किसी वक्त भी सेंट एंथनी चर्च में एडोरेशन के लिए आ सकते थे। कौमी ज़ियारत का मुक़द्दस मरियम आबाद में पैदल काफ़िले का ये तख्लीकी काम भी फादर एंड्रू फ्रांसिस के उनके ज़िम्मे में आता है कि उन्होंने लोगों को तैयार किया, और उस वक्त बाबा यूसुफ रहनुमाई करते थे, और लोग लाहौर से पैदल ये अबाउट 98 किलोमीटर्स 98 किलोमीटर ये फासला पैदल 3 दिनों में तय किया करते थे।
1997 میں جب شانتی نگر کا واقعہ ہوا، وہاں پر حملہ ہوا اور جلا دیا گیا، اس وقت کے پنجاب کے گورنر شاہد حامد نے مولانا آزاد کی سربراہی میں مسلم اور مسیحی قائدین کا ایک وفد تیار کیا، جس میں ہم مسیحیوں کی طرف سے فادر اینڈریو فرانسس، فادر بینجمن جوزف، مرحوم فادر رحمت راجہ، مرحوم فادر فرانسس ندیم اور میں اس میں شامل تھے۔ جب میں فادر اینڈریو فرانسس کے ساتھ فادر بینجمن جوزف کے ساتھ موجود تھا تو راستے میں ہم نے بڑا اچھا وقت گزارا، اور ہم لوگوں کے لیے ان کے ساتھ بہت کنسرن تھے کہ وہاں جا کر ان کے ساتھ ہم نے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ آپ سال کے دوران لاہور کے ریلوے اسٹیڈیم میں یوخرستی عبادت اور یوخرستی سجدے کا اہتمام کیا کرتے تھے، جس میں ایک بڑی تعداد میں لوگ شامل ہوا کرتے تھے۔ بحیثیت بشپ آف ملتان مسیحی مسلم رابطے کے سلسلے میں انہوں نے بین المذاہب مکالمے پر بہت زور دیا اور بین الکلیسیائی مکالمے کے لیے کوشاں رہے۔ فادر فرانسس ندیم اور میں قومی ادارہ ادبیات میں ان بشپ اینڈریو کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مسیحی روزوں کے دوران علامہ طاہر القادری نے ہمیں ماڈل ٹاؤن میں واقع مسجد میں دعوت دی، اور وہاں پر میں نے بشپ اینڈریو کے سربراہی میں مسیحی روزے پر بات چیت کی۔ ان کی بہت سی ایسی خدمات ہیں جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن تاکہ دوسروں کو بھی موقع ملے میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اینڈ آئی وش Bishop Andrew Francis his 74th birthday in heaven. May his soul rest in peace. Thank you.